Student, now we are on question number E of the grammar section, and this question is about the compound preposition. First of all, you must know that what basically compound prepositions are. So prepositions तो आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर्स में देखी कि prepositions क्या होती हैं. Now compound preposition are two or more words working as a preposition. दो या दो से ज़्यादा जब अल्फाज मिल के एक प्रपोजिशन के तौर पे काम करते हैं तो हम उनको कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं. चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन. हमारे पास कुछ कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं. अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ. स्टूडेंट्स, हमें कुछ कंपाउंड प्रपोजिशंस दी गई हैं और नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं. हमने अकॉर्डिंगली उन फिल इन द ब्लैंक्स को जो प्रोवाइडेड कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं उनसे फिल करना है. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. डैश माय टीचर, इट्स अ ग्रेट बुक. सो देयर हियर इट विल बी अकॉर्डिंग टू, according to my teacher, it's a great book. Next is he had to retire because of ill health. I am standing in front of the school building. He is coming along with his friend. So students, you have seen that we are putting the compound prepositions accordingly in different, we can say, fill in the blanks. Let's move towards our statement number 4. And the statement number 4 is, I am dash my home right now. I am away from my home right now. He left for Sialkot instead of Lahore. He could not attend the seminar because of his brother's marriage. So students, we have done our exercise number E, and I hope आपको ये exercise compound preposition की समझ आई होगी. Let's move to our last exercise. This exercise is about past perfect continuous tense, and earlier we have discussed the past perfect continuous tense with the structure that subject with helping verb had been plus ing form of the verb and then object, and then if there is time dimension, sense or for. लेट्स सी कि ये एक्सरसाइज हमसे क्या डिमांड करती है. राइट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट. लेट्स सी. सलीम वाज सिटिंग ऑन चेयर आउट ऑफ द ब्रेथ. ही. नाउ हियर द वर्ब इज रन, तो दैट मीन्स ही हैड बीन रनिंग. Salim was sitting on the chair out of air. He had been running. Now ये हमने had been जो लगाया, helping verb है past perfect continuous का, और running हमारे पास continuous form है. Next is we dash along the road for 20 minutes while a car stopped and driver offered us a lift. We had been walking We had been walking along the road for 20 minutes when a car stopped and driver offered a lift. Now here you can see that had been is the helping verb of past perfect and walking is the continuous form of the verb. Third is I dashed my homework for 2 hours when my friend came home. I had been doing. I had been doing
homework for 2 hours. So student, आपने तीसरे सेंटेंस में देखा कि सेंटेंस है कि I had been working my homework for 2 hours. फॉर यहाँ पे क्यों लगाया गया? क्योंकि टाइम डायमेंशन क्लियर नहीं है, डिफाइन टाइम नहीं है, हमें पता नहीं है कि द पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट कि मैंने 2 घंटे जो है ना अपना होमवर्क किया था, वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है. दैट्स वाई वी आर पुटिंग हियर द फॉर टाइम डायमेंशन. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 4 इज दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. दे हैड बीन taking exercise since morning. The last is the patient had been crying. The patient had been crying with pain for 2 hours when the doctor arrived. सो स्टूडेंट्स, आपने इन सब फिल इन द ब्लैंक्स में देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन पुट किया है, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म. सो कीप इन माइंड कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नजर आ जाए, कि आप उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की समझ आई होगी. My name is Sadar Hamza. I am your English instructor from tutoria.pk. I hope आपने ये पूरी एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड किया होगा. Let's see you in the upcoming video.